implement a queue. How we can implement a queue? It is in front of you. Let us consider that I have got an array. I got an array और हम लोगों ने शायद लास्ट टाइम इसको डिस्कस किया था. लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? क्यू में जब भी ऑपरेशन होते हैं तो दो एंड से होते हैं. एक एंड से ऐड होता है और एक एंड से डिलीट होता है. तो जिस एंड से ऐड होता है उसको क्या कहते हैं? समवन रिकॉल? जिस एंड से ऐड होता है उसको क्या कहते हैं? जिस एंड से एलिमेंट पुश होता है यू कैन कॉल इट द रेयर एंड, और जिस एंड से एलिमेंट डिलीट होता है you can call it the front end. If we have got rear end and we have like a front end. Okay, good. So we have got rear end, we have got front end. You take time. Let's say 2 मिनट रुको, यहाँ पर मैं -1 लिख देता हूँ, and so that I can start with the -1. Initially I can call, let's say this is a front end and rear end, both are -1 both are -1. You want to add the element, ये दोनों -1 है और जो एडिशन करना है वो हमेशा रेयर एंड से ऐड करना है. अगर आपको रेयर एंड से एलिमेंट ऐड करना है, हाउ डू ऐड इट? यू गो अहेड, रेयर एंड को प्लस प्लस करो एंड यू कैन ऐड अ एलिमेंट देयर. ओके, दैट इज गुड. एंड यू वांट टू ऐड वन मोर एलिमेंट, यू अगेन से रेयर प्लस प्लस, यू कैन एलिमेंट देयर. और अगर आपको और एक एलिमेंट ऐड करना है, go ahead, you can simply say rare plus plus and you can add an element there. It's pretty simple. So I'm saying that you can begin with the initialization, where for the array you can have some allocation. You can make front is equal to -1, and you can also make rear is equal to -1. But while pushing the element, logic is pretty simple. You need to simply say rare plus plus, and then ARR of rare is going to be the new value that you want to add it. So that looks good. So you want to add one more element, you go ahead. I want to add one more element, 30 is 40. I want to add one more element, continue further, 30, 40, 50. Okay, that is also good. I want to add one more element, 60, rare plus plus 60. I want to add one more element. Take a look at the diagram. I want to add one more element. I want to add one more element. What is to be done? Or not possible, because my queue is full. When the queue is full, when that queue is full, where rare is equal to max -1, yes, or size -1 you can say. So when rare is equal to max -1, I can say that queue is full. Queue is full. Okay, let us just go ahead. Let us say that currently I am over here, or currently I am over here, and let's say that I have added the element 10, 20, 30, 40. Let us go ahead. I want to delete element. अब अगर आप लोग ठीक से नोट करते हो, मेरा इफेक्टिव क्यू कहां से कहां तक है? इफेक्टिवली क्यू इज फ्रॉम फ्रंट प्लस 1 टू रेयर. Effectively my queue is from front plus 1 to rear. Effectively queue is from front plus 1 to rear. Take a look at this. So if you want to delete an element, what you need to do? Go ahead, just say front plus plus. If you just say front plus plus, as good as this element is deleted, and then your queue left with this. Please note that आपने insert करते वक्त कैसे insert किया था? 10, 20, 30, 40. delete करते वक्त पहला कौन सा delete हुआ? delete करते वक्त पहला कौन सा delete हुआ? ओ पहला तो 10 delete हो गया. That is very simple. तो जो पहले अंदर आया था वो पहले बाहर जा रहा है. इसको हम लोग कह सकते हैं like a first in first out kind of data structure. Oh, that is great. चलो एक और delete करना है. Again say front plus plus. As you say front plus plus, this is as good as deleted, and your queue left is only 30, 40. So जिस order में in किया था exactly उसी order में out हो रहा है. So the pop logic is as simple as front plus plus. Let me pop one more. So I just deleted this one as well. I deleted this one as well. So this is gone. And I want to delete one more. So I deleted this one as well. And then I want to delete one more. Oh, queue is empty. Can you please tell me when queue is empty? When your queue is empty, yes, I understand that the front is equal to rear makes my queue as an empty queue. Okay, that is good. And what about peak logic?
व्हाट अबाउट पिक लॉजिक? पिक का लॉजिक क्या है? जस्ट गो बैक, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, इट वाज समथिंग सिनेरियो लाइक दिस। एट दिस मोमेंट हम लोग किसको डिलीट कर रहे हैं? हम लोग फ्रंट के आगे वाले एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं। द करंट फ्रंट इज ऑलरेडी डिलीटेड, सो करंट फ्रंट जहां पर है वो ऑलरेडी डिलीटेड है, उसके आगे वाला जो है वो हमको डिलीट करना है, वो आगे वाला जो है वो हमको डिलीट करना है। सो एब्सोल्युटली इट कुड बी एज इजी लॉजिक एज रिटर्न ARR ऑफ फ्रंट प्लस वन, ARR ऑफ फ्रंट प्लस वन, दैट्स इट, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। और कुछ करने की जरूरत है? एब्सोल्युटली कुछ करने की जरूरत नहीं है, दिस इज समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। सो we have got init method, we have got push method, pop method, pick method, isFull method, isEmpty method. So sir, this is going fantastic. Yes, it is going fantastic, but it also has got some problems. It also has got some problems, and let me show you the problems. मैं आपको इसके प्रॉब्लम भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज पे अटेंशन नाउ, पे अटेंशन। लेट्स से दैट we have got, this is front and this is rear. See it carefully, see the problem now. Now I'm trying to tell you what are the issues with this. This is like a front, this is rear. Again I want to add the element. How do you add the element? बोलो फिर से एक बार, कोड आपके सामने ही है, क्विक रिवीजन चल रहा है। I want to add the element. How to add the element? Go ahead, rear को प्लस प्लस करो, rear को प्लस प्लस करो, you add the element, very good. I want to add one more element. Go ahead, you want to add one more element, again rear को प्लस प्लस करो, you add the element there. आपको और एक एलिमेंट ऐड करना है, यू कंटिन्यू फर्दर, रेयर प्लस प्लस, यू ऐड द एलिमेंट, और एक एलिमेंट ऐड करना है, रेयर प्लस प्लस, एंड बस बहुत हो गए। सो आई हैव एडेड 4 एलिमेंट्स। टेक अ लुक एट दिस, माय क्यू इज लुकिंग गुड फ्रॉम फ्रंट प्लस 1 टू रेयर। द नेक्स्ट एलिमेंट टू बी डिलीटेड इज ओवर हेयर, जो फ्रंट के आगे वाला एलिमेंट है ये मैं डिलीट कर सकता हूं, आई अंडरस्टैंड दैट। एंड इफ आई अंडरस्टैंड दैट, सी इट केयरफुली, लेट अस गो अहेड एंड पॉप द एलिमेंट। How do I pop the element? Or to pop the element, yes, it is hardly front plus plus, nothing else is to be done. You continue further, again say front plus plus, nothing much to be done. Is that all right? Just say front plus plus, nothing much to be done. So it is good. How many elements I have deleted so far? 2. I have added 4 elements. I deleted 2 elements. Okay, that is good. Let me add few more elements. Let me add few more elements. Please help. एलिमेंट और ऐड करना है, आई वांट टू ऐड 50 60। हाउ डू ऐड 50 60? अगेन रेयर is to be set plus plus, you add the element into this, again rear has to be set plus plus, again you add the element into this, but wait, I want to add one more element into this, I want to add one more element into this. You say that your rear, it is, you find that it is full. So why it is full? The condition says that it is full, please pay attention, your condition says that it is full, but my diagram is able to tell me that there is, very well, there are 2 places available over here, there are 2 places available over here, and that 2 places are not getting utilized properly, that 2 places are not getting utilized properly, and this is a kind of a drawback of this type of queue, what you call it the linear queue. So what is the linear queue? The linear queue is one, I say that the memory improper, proper memory यूटिलाइजेशन, आपका मेमोरी यूटिलाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, और ये सबसे काइंड ऑफ, यू कैन से इट्स अ प्रॉब्लम, एंड दैट इज द रीजन, टेल लेट मी टेल यू टेक्निकली, लीनियर क्यू ये प्रैक्टिकली कहीं पर भी यूज नहीं होता है। आई एम टेलिंग यू, ये बुक में होता है इसलिए मुझको पढ़ाना पड़ता है, अगर मेरे को चॉइस दिया जाता तो मैं लीनियर क्यू कभी नहीं पढ़ाता, करेक्ट? तो लीनियर क्यू इज नॉट समथिंग, सर हम लोग कौन सी कंपनी में यूज करेंगे, किसी कंपनी में नहीं यूज करेंगे, किसी एल्गोरिथम में नहीं यूज करेंगे, डोंट वरी, यू आर नॉट गोइंग टू यूज लीनियर क्यू एनी टाइम इनटू द एनी रियल लाइफ कोड, एनी रियल लाइफ कोड, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो चलो, अभी हमारे बुक में है, हमें लीनियर क्यू पढ़ना है, तो गो अहेड एंड लेट अस हैव अ वेरी क्विक implementation of a linear queue.
Pallavi saying that we have to shift every element to the left while popping, or not necessary. अगर आप लोग उसको पॉप करते वक्त अगर आप उसको शिफ्ट करोगे, अगर आप लोग शिफ्ट करोगे, then you can definitely say that it's like a better utilization. But moment you do that shifting, Pallavi, I hope you realize that the time complexity will hamper. I hope you agree. अगर आप लोग हर बार उसको शिफ्ट करने लगोगे, then your time complexity will be hampering. And always you look for ideal time complexity to be O of 1. And that is the reason shifting is not considered to be a good solution, even though you'll be able to manage the memory with that. So let's go back. File, new, new Java project. चलो आप लोग भी क्रिएट कर लो प्रोजेक्ट. अरे कहाँ पर गया? Java project. Next. And what we are talking about, like a linear queue. Okay, linear queue. Finish. We have a linear queue. Inside linear queue, let's go ahead. Let me create a class. Class linear queue main. Okay, that is good. आप लोगों ने ऑलरेडी स्टैक बनाया है खुद का, तो जो आप लोगों ने स्टैक ऑफ खुद का बनाया हुआ है, यू फॉलो द सिमिलर कोड ओवर हियर. क्लास लीनियर क्यू, वहां पर हमने सिर्फ स्टैक कहा था, यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं क्लास लीनियर क्यू. इन क्लास लीनियर क्यू, व्हाट आई नीड वन एरे. ये रहा आपका एरे, and you need two members, another rear and front member. All right. In a constructor, what do you want to do? In a constructor, what do you want to do? Definitely I want to initialize the memory. तो memory तो हम लोग initialize कर ही लेंगे, that is not a problem. But after that rear और front को क्या करना? Initially you can make rear is equal to -1 and even front is equal to -1. So that is -1. That is all right. So things are going well. It's not a problem. You continue further. Now you want to push the element. Okay, एक काम करते हैं, सबसे पहले empty और full का condition लिख लेते हैं. So boolean is full. I can simply check if the rear is equal to max -1. What is max -1? Length -1. If it is equal to -1, if this condition is true, it will return true. If this condition is false, it will return false. All we have done. You continue further. What about is empty? Is empty, आई गेस हम लोगों ने पेपर वर्क किया था, और वो पेपर वर्क से हमें पता चल गया था कि empty तब होता है when rear and front both are same. When both are same, then it is a condition of empty. Okay, that is good. अब बचे तीन फंक्शन, push pop pick. Let's go ahead. Public void push, and I want to push the element. I want to push the value. To push the value, logic was very simple. Rear plus plus, a rear plus plus, and error of rear is equal to value. Oh, finish. But what is a good idea? A good idea would be, I'll check it. If it is already full, please go ahead and throw the exception. Please note this code is going quite parallel to the code that we have learned earlier, isn't it? So I'm simply saying that queue is full. ऐसे ही कोड हम लोगों ने स्टैक के अंदर भी लिखा था. अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो प्लीज गो बैक एंड टेक अ लुक एट दिस. So push, it is going well. You continue further. What about pop? A pop code is also very easy. The pop code, all I need to do is that simply say front plus plus or front plus plus. But again, pop tab karte hain when your queue is not empty. So is empty. If it is not empty, just go ahead and throw that exception saying that queue is empty. All right. And what about how do you get the topmost element? You get the topmost element, you got a pick operation, you got a little pick operation, and is empty. Again, if it is not empty, then I can, and I'm just want to return the next element. मुझको front को change नहीं करना है, मुझको front को change नहीं करना है, मुझको सिर्फ उसका अगला जो भी element है वो return करना है. So I can simply say ARR of front plus one, that should be more than sufficient. Nothing extra need to be done. I hope
This is pretty clear, pretty simple, pretty straightforward. And wait. अब मेन का प्रोग्राम जो है, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है कि मैं फिर से एक बार वो मेनू ड्रिवन प्रोग्राम फिर से लिखूं. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट, वो मेनू ड्रिवन वाला पार्ट मैं कॉपी पेस्ट करने की सोच रहा हूँ. पुश एंड पॉप एंड दिस एंड दैट. शायद मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कुछ लोग इसका नाम क्या कहते हैं, कुछ लोग इसका नाम ये लगते हैं, व्हाट इज दैट, एनक्यू डीक्यू. चॉइस इज योर्स. सो आई होप आप लोगों ने ऑलरेडी सुना हुआ है नाम में क्या रखा है. आर्किमिडीज एक बार कह के गए थे, राइट. सो वी हैव गॉट स्कैनर java.util. That is good. You continue further. I want to create a queue. Oh, by the way, sorry, linear queue. Linear queue. Creating object of a linear queue. Vishal, which line you have got problem? Feel free to tell. Why it is not empty? Common sense है. अगर empty है तो pop किसको करोगे? अगर क्यू के अंदर कुछ नहीं है तो फिर पॉप किसको करोगे? पॉप करने के लिए कुछ तो पहले क्यू में होना चाहिए. पिक करने के लिए, पिक मतलब क्या है? चेक द टॉप मोस्ट एलिमेंट. अगर टॉप मोस्ट एलिमेंट नहीं है, इफ इट इज, सॉरी मैंने उल्टा लिखा, इफ इट इज एम्प्टी, सॉरी, if it is empty, if it is empty, then we want to throw the exception. If it is empty, then we want to throw the exception, correct. If it is not empty, then we want to pop it, right. So that not is my mistake. Yes, Vishal, thank you for letting me know. So I'm saying that if it is empty, just I want to throw the exception. I just want to throw the exception. If it is not empty, then I want to delete the element. If it is empty, I want to throw the exception. If it is not empty, then I want to see the topmost element. I hope Megha, you want to say the same, right? Right? Okay, no problem. ए बाय द वे बन गया है क्या? हाँ लग तो रहा है बन ही गया है. लेट्स सी. ऐसे क्यू को एस नाम देना मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं इसका नाम भी बदल रहा हूँ. क्यू को मैं क्यू नाम दे रहा हूँ. ऑल राइट, दिस इज डन. एंड देन यू राइट क्लिक, you run as Java application. Let's see. Let us try to push the element. Let's say 10, second element 20, 30, और जिस ऑर्डर में हम लोग पुश कर रहे हैं उस ऑर्डर में पॉप होना एक्सपेक्टेड है. सो लेट मी से पॉप. अब क्या पॉप होगा? मैंने पुश करते वक्त 10, 20, 30, 40 ये पुश किया. तो अगर मैं पॉप करूंगा तो क्या आएगा? 10. यस आ रहा है. और एक बार पॉप करूंगा तो, और एक बार पॉप करूंगा तो यस इट इज 20. आई अंडरस्टैंड दैट. ओके दैट इज गुड. लेट मी पुश फ्यू मोर. लेट मी पुश फ्यू मोर. लेट मी पुश 50. लेट मी पुश 60. अब क्या होगा? इफ आई ट्राई टू पुश वन मोर, विल इट वर्क? If I try to push one more, will it work? Not really, क्योंकि 6 का array full हो गया है and now it is saying that oh queue is full. 10 20 हमने ऑलरेडी रिमूव कर लिया था. 10 20 हमने ऑलरेडी रिमूव कर लिया था. 30 40 ऑलरेडी क्यू में था. हमने 50 और 60 ऐड कर लिया और 6 का जो क्यू है वो ऑलरेडी आपका फुल हो गया. इट इज एग्जैक्टली सेम डायग्राम जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था, मैं भी यही फॉलो कर रहा हूँ. बाकी मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ, करेक्ट. एंड देन यू कंटिन्यू फर्दर. हाँ अशरफ, टेक अ लुक एट दिस. लेट मी पॉप वन मोर. इफ आई एम पॉपिंग वन मोर, टेक अ लुक एट दिस. करंटली सिनेरियो इज लाइक दिस कि फ्रंट यहां पर है और this is the queue at the moment available. If I delete one more, can you please tell me what will get popped? अगर मैं एक और पॉप करूंगा तो क्या होगा? What will get popped? Which value will be popped? Yes, 30. Absolutely. Go ahead. 30 is popped. One more. One more. 40. One more. 50. अच्छा पीक हो गया. Sorry, pop. And then this is pop 40. Pop 50. Yes, good. One more. One more 60. Wait for a minute. If one more 60, right now what happened? Even this is deleted, this is deleted, this is deleted, this is deleted, and somewhere front is reaching over here. If front is reaching over here, rear is already there. If I try to pop one more, if I try to pop one more, oh yes, queue is empty. And since queue is empty, since queue is empty, I will get the exception. You find that saying that queue is empty. But wait for a minute. If I try to push one more, then
If I try to push one more, then you take a look at the diagram, and then I'm saying that even rare is already at the end, so it is saying that, oh, queue is full also, so queue is empty also, and queue is full also. I'm saying that this is really stupid implementation of the memory, stupid utilization of the memory, and that is something you never want to look at, something that you never want to look at. I guess Ashraf, you got the point. अशरफ, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया? If your front is all at the end, then your rear is equal to front, so it will show you the empty. And that is the reason I'm saying that linear queue is not something that you ever want to use it into your actual production level code. तो सर ये प्रॉब्लम कैसे रेक्टिफाई करेंगे? How do we rectify this problem? Rectify this problem, what I'm saying is that, take a look at this. Please take a look at this. What I'm saying is that to rectify the problem, अभी rear हमारा end में, a rear हमारा end में, and we cannot add the element further. We cannot add the element further, but I understand that there is the place available over here. ए यहाँ पर तो कुछ जगह बाकी है. अगर यहाँ पर कुछ जगह बाकी है तो मुझको क्या करना चाहिए? Ideally ये rear अगर at the end है, I should take it at the start. I should take it at the start, and then somewhere I'll be able to see that, oh, this is where I can add the element. तो मैंने क्या किया? आई कैन डेफिनेटली डू लाइक दैट कि रेयर जो एंड में था उसको हम लोग वापस से स्टार्ट में लेके यहाँ पर एलिमेंट ऐड कर सकते हैं. बट इन दिस केस व्हाट आई डन, हाउ आई इंक्रीमेंटेड माय रेयर, आई इंक्रीमेंटेड रेयर फ्रॉम -1 to 0, then 1, then 2, then 3, then 4, then 5, and after 5 I incremented back to 0. I incremented rear from this back to 0. And whenever you are doing this sort of increment, whenever you are doing this sort of increment, this is called as a circular queue.